औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश, और नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर हमारे पास है 7, और यूनिट का नाम है सुल्तान अहमद मस्जिद। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि लास्ट एक्सरसाइज में हम इसकी ट्रांसलेशन, थीम और साइड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी ग्लॉसरी। इम्प्रेसिव, रिमार्केबल, मुतासिर कुन। ऑस्पाइस एंड इन सराय आर शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर द ट्रैवलर। मुसाफिरों के रहने के लिए आर्जी जगह, आर्जी ठिकाना। हॉस्पाइस, सरा, ठीक है जी। और या फिर इसका जो और मीनिंग है उसमें हम कह सकते हैं कि ये मोहताजों के लिए भी हॉस्पाइस प्लेस होती है। मोहताजों के लिए एक अलग से जगह बनाई जाती है, उसे हॉस्पाइस कहते हैं। या फिर अगर हम जदीद इसमें मॉडर्न इंग्लिश में आते हैं तो इसका मतलब होता है हॉस्पिटल्स। एक छोटा सा हॉस्पिटल एक साइड पे होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। एम्बेलिश, सजाना, डेकोरेट, सजाना, ठीक है जी। फ्लेमवाइंट, कलरफुल, ब्राइट, रंगीन। इंटीरियर, इनसाइड, अंदरूनी हिस्सा। कार्व्ड, इम्प्रिंटेड, कंधाकारी करके जमीन रगड़ रगड़ के जो लिखा जाता है, ठीक है जी। एडोर्न्ड, डेकोरेटेड, सजाना। अपॉइंटेड, सेलेक्ट करना, मुतय्यन कर देना, ठीक है प्यारे बच्चों। कंप्रीहेंशन में हमारे पास क्वेश्चन आंसर है जी। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है जी, वाई इज द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद को नीले रंग की मस्जिद क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं जी? तो इसका आंसर है सुल्तान अहमद इज आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद। इसे नीली मस्जिद भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू टाइल्स, इसके नीले रंग की टाइलों की वजह से। That embellish its interior, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को दिलकश बना देता है। दूसरा क्वेश्चन है, who was appointed as the architect of the masjid। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर है द रॉयल आर्किटेक्ट सैयद Mehmet Aga was appointed as the architect of the mosque by the Sultan and also the in charge of the प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी होता। सैयद मेहमत आगा को, जो कि एक शाही मामार थे, उसको इस मस्जिद की तामीर का फर्ज सौंपा गया। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। What was the purpose of hanging a heavy iron chain at the entrance of the court? A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. This site was meant for the Sultan alone. The chain was put there so the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. जी तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक। इसका प्यारे बच्चों आंसर है द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क इज एम्बेलिश्ड विद ब्लू टाइल्स व्हिच गिव्स द इंटीरियर एन अट्रैक्टिव लुक। दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाई डू यू थिंक द मदरसा एंड द हॉस्पाइस वर पार्ट ऑफ द मस्जिद। आंसर, मदरसा वाज द स्टूडेंट who came to acquire Islamic knowledge and religious education, and the hospice was for the needy and the insolvent. Next, question number 6. Who constructed Masjid Sophia? Answer, Hagia Sophia Mosque was constructed by an Ottoman caliph.
ऑटोमन कह लें, सल्तनत अस्मानिया, खलफाए अस्मानिया के दौर में ये मस्जिद तामीर की गई थी, उन्होंने तामीर की थी। Vocabulary: consult the trier and find out the synonym of the following words: embellish, integrate, splendor, majesty, illuminate. Embellish, decorate. Integrate, to put together, साथ साथ. Splendor, magnificence, शानदार जिसे हम कहते हैं. Majesty, magnificence, और इसे अजमत के लिए कहते हैं. Illuminate, light up, लाइटें लगा के सजा देना. जी तो प्यारे बच्चों, circle the correct antonym of the given choices. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Ugly, unimpressive, remarkable. Impressive का antonym क्या होगा? Unimpressive. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey. Largest का antonym क्या होगा? Smallest, greatest, populated. Largest antonym इसका होगा smallest. क्या होगा प्यारे बच्चों? Smallest. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance on the western side. Heavy, heavy का एंटोनिम क्या होना चाहिए? Big, bold या light? Heavy वजनी, मेरे ख्याल में light. जी तो इसका एग्जैक्ट light ही है. Upper level of the interior is adorned with the blue paint. Upper का प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? Lower, outer या higher? Upper ऊपर वाला, तो नीचे वाला होना चाहिए lower. देखते हैं जी. Lower. The floor are covered with the carpets. Cover, ढांप देना. Spread, exposed या decorated. I think exposed. देखते हैं आंसर. Exposed. प्यारे बच्चों समझ आ गई? मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चले जी, आपको समझ आ जाती है तो मेरी थकान उतर जाती है. Use the following words in sentences: impressive, detoxiously, spacious, humility, flamboyant. जी प्यारे बच्चों, impressive मुतासिर कुन. The major has a very impressive personality. Dexterously, महारत से. The engineer built mason very dexterously. Spacious, खुला. Ahmed lived in a spacious house. Humility, आजिज़ी. Hazrat Asma was the example of humility. Flamboyant, रंग बरंगा. The flamboyant design of tiles make this mosque beautiful. नहीं, make the flamboyant design of tiles make this mosque beautiful. ठीक हो गया जी. What are the following abbreviations stand for? चलें जी, डायरेक्ट हम इनको देखते जाते हैं. USA, USA stand for United States of America. UK, United Kingdom. UAE, United Arab Emirates. ICU, Intensive Care Unit. MBBS, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. PhD, Doctor of Philosophy. MPhil, Master of Philosophy. PA of Pakistan Air Force. NADRA, National Database and Registration Authority. जी तो प्यारे बच्चों, UN, United Nation. ISSB, प्यारे बच्चों, ISSB Inter Services Selection Board. WAPDA, Water and Power Development Authority. प्यारे बच्चों, PTB, Pakistan Tobacco Board. Pakistan Technology Board.
या पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, टेक्स्ट बोर्ड, टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है वैसे। MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MPA मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNECCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई? वेल डन माय गाइड्स। ग्रामर का हिस्सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं। सम एडवर्ब लाइक एडजेक्टिव आल्सो हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसे मस्जिद इज so designed that even when it is most crowded, crowded, more crowded, most crowded, ठीक है, ये डिग्रीज होती हैं। Everyone in the masjid can listen to and look at the imam। मस्जिद जब भरी हुई होती है तो हर कोई सुन भी सकता है और देख भी सकता है इमाम को। The masjid still remain to be one of the most visited सबसे ज्यादा सर, तो ये भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की यादगारों में से। प्यारे बच्चों, कंप्लीट दिस टेबल विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की डिग्री लगानी है जनाब आपने। कीप मच, ठीक है, देखते हैं जी क्या आएगा। कीप मोर और कीप मोस्ट, कीप, केप्ट मच, केप्ट मोर, केप्ट, ये कंपैरेटिव होती है और ये सुपरलेटिव होती है। सैंग ब्यूटीफुल, फुली, दूसरी होती है जनाब सैंग ब्यूटीफुली, और जो थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री वो है सैंग ब्यूटीफुली, यानी ये तीनों एक जैसी है। वैसे ब्यूटीफुली के साथ अगर हम मोर एंड मोस्ट लगा ले तो भी ठीक होता है। मोर ब्यूटीफुली सैंग, मोर ब्यूटीफुली सैंग मोस्ट ब्यूटीफुली। स्लेप्ट लिटल, स्लेप्ट लेस, डिग्री आ गई जनाब कंपैरेटिव की, और सुपरलेटिव की आ गई स्लेप्ट लीस्ट। लुक्ड गुड, गुड बेटर बेस्ट, है जी, लुक्ड बेटर और लुक्ड बेस्ट। अराइव्ड अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। जी तो प्यारे बच्चों, यूज द अबव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन द सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जांपल। दे केम अर्ली इन द मॉर्निंग, आई केम अर्लियर देन हिम, ही केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल। तो ये अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट, ये पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। तो वो कह रहा है यूज द अबव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन योर ओन सेंटेंसेस। हमने अपने सेंटेंसेस बना दिए। He kept much patience, he kept more patience और he kept most patience, यानी much, more और most। नेक्स्ट है हमारे पास she drew a painting beautifully। तो क्या लगाएंगे, मैंने पहले भी बताया था, more beautifully और most beautifully। she drew a painting beautifully, she drew a painting more beautifully than her friend beautifully, she drew a painting most beautifully of all। थर्ड है जी she slept little, she slept less और she slept least of all। least, little, less और least। और फोर्थ नंबर पे है looked good। good की क्या होती है, good, better, best। he looked better than before और looked सुपरलेटिव का क्या आएगा, he looked the best। शहजाद अराइव्ड अर्ली, अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। शहजाद अराइव्ड अर्लियर, शहजाद अराइव्ड अर्लीस्ट। तो हमारे पास अब एक टेंस आ गया जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया जी। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और
फिर मेन वर्ब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हैज और हैव पहला एक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद फिर बीन आता है दूसरा एक्सिलरी वर्ब, और तीसरा होता है बेस वर्ड और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है। An action that has just stopped or recently stopped, इसकी पहचान होती है। We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and stopped recently. I am tired because I have been running. Why is the grass wet? Has it been raining? You don't understand because you haven't been listening. An action continuous up to now, अब तक जो continuous हो उसमें भी यही tense इस्तेमाल करते हैं। We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and is continuing now. This is often used with for and since. We often use for and since with the present perfect continuous tense. We use for to talk about a period of time, 5 minutes, 2 weeks, 6 years. We since to talk about a point in the past, 9 o'clock, 1st January. जिसमें हमें एग्जैक्ट पता हो वहां पर सेंस लगा देते हैं और बाकियों के साथ फार लगा देते हैं। जैसे कई हफ्तों से, अब हफ्तों का हमें पता नहीं कौन सी है तो फार लगाएंगे, और अगर कह दूं मंगल से या तो बुध से 12 अक्टूबर से, तो यहाँ पर हमें पता तो हम सिंस लगाएंगे। I have been reading for 2 hours. अब हमें 2 hours का पता नहीं है कौन सी है तो हमने फार लगा दिया। We have been studying since 9 o'clock. अब हमें 9 बजे से पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट पॉइंट का पता है तो हम सिंस लगाएंगे। For how long have you been learning English? You are still learning now. प्यारे बच्चों को इस टेंस की समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों, put for or since in the blanks. I have been studying 3 hours. देखो प्यारे बच्चों 3 hours है। अब हमें 3 hours कौन से पता है, सुबह वाले हैं, शाम वाले हैं, दोपहर वाले हैं, तो जो जहां पर एम्बिग्युइटी हो वहां पर फार लगा देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, फार। अच्छा, जहां पर हमें पता हो एंडिंग का, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी 7 PM, यानी कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, 7 PM से स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल गया, तो यहां पर क्या लगाएंगे, सिंस लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 आवर्स कौन से हैं, हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं चला था इसलिए फार लगाया था। अच्छा, अगला देखते हैं, तारा हैजंट बीन फीलिंग वेल डैश 2 वीक्स। अब 2 वीक्स कौन से हैं, लास्ट वाले हैं, पहले वाले हैं, वीक्स तो नहीं पता ना, तो फार लगा देंगे यहाँ पे। तारा हैजंट बीन विजिटिंग अस डैश मार्च। अब मार्च ये कौन सा है, 2025 वाला है, 26 वाला है, 27 वाला है, ये मार्च की किस डेट से है, तो ये हमें पता नहीं है तो फार लगा देंगे। लेकिन इन्होंने, अच्छा मार्च से स्टार्ट हो रहा है, मार्च एक महीने का नाम आ गया तो सिंस लगा देते हैं जी। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश अ लॉन्ग टाइम, फार लगा देंगे चुप करके, लगा दिया, चले जी। ही हैज बीन लिविंग बैंकॉक डैश ही लेफ्ट फॉर स्कूल। तो यहां पर he has been living in Bangkok dash he left the school, for he left the school since, जब से उसने स्कूल छोड़ा है वो है, तो कब से छोड़ा है नहीं पता था, तो यहाँ पर फार होना चाहिए, ये मिस्टेक है, इसको फार कर लीजिएगा। Make 5 sentences using present perfect continuous tense and convert them into negative and interrogative. She has been studying for 2 hours. The boys have been making a noise for an hour. I have been solving some since morning. The horse has been running very fast since 10 o'clock. And we have been listening to the news for 5 minutes. इसी के नेगेटिव बना लेते हैं जी। She has not been studying for 2 hours.
The boys have के बाद और has के बाद not लगा देना. Not been making a noise for an hour. I have not been swallowing some since morning. The horse has not been running very fast since 10 o'clock. And we have not been listening to the news for 5 minutes. और जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हैव और हैज को शुरू में ले आते हैं. हैव द बॉयज बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर an hour. Have I been solving some since morning? Has the horse been running very fast since 10 o'clock? Have we been listening to the news for 5 minutes? Or has she been studying for 2 hours? राइटिंग स्किल है प्यारे बच्चों हमारे पास. सुल्तान अहमद मास्क के बारे में हमने लिखना है जी. तो देखिए जनाब, सुल्तान अहमद मास्क आल्सो नोन एज ब्लू मास्क इज वन ऑफ द manifestations of Muslim art and architecture in the world. The mosque is situated in Istanbul, Turkey. It was constructed during the rule of Sultan Ahmad I. Sadefar Mehmed Agha, the royal architect, designed the mosque so skillfully that even today is mosque considered unmatched in its size, majesty and splendor. There is also a heavy iron chain hung in the upper part of the court entrance on the western side of the mosque. The Sultan had to lower his head to avoid hitting the chain and also as the symbolic gesture. To ensure the humility of the ruler in the face of the divine, the interior of the mosque at the lowest level is decorated with ceramic tiles in the form of tulips, whereas at gallery level, these designs represent the flowers and fruits. The upper part of adorned with the blue paint. Mihrab is made up of curved marble. The mosque is designed that even when it is most crowded, everyone in the mosque can hear and the Imam. Four minarets on corners represent the height of glory of the Muslim architecture. The mosque has been public place for the tourist. Mihrab is the most important element of the interior of the mosque. Made of curved marble, a large number of visitors and Turks together in the park facing the mosque to hear the call to the evening prayers. The mosque still remains to one of the most frequented monuments of the world. प्यारे बच्चों को समझ आ गया जी. तो प्यारे बच्चों, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द आर्किटेक्चर ऑफ एनी हिस्टोरिकल प्लेस इन द पाकिस्तान. एनी हिस्टोरिकल प्लेस हमने डिस्कस करनी है जी, और वो है जी मेरे ख्याल में बादशाही मॉस्क, बिल्ट इन 1672 to 74, 2 सालों में तमीर की गई जी. तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं. बादशाही मॉस्क इज वन ऑफ द few significant architectural monuments built during the Imperial Aurangzeb long rule from 1658 to 1707. It is presently the 5th largest mosque in the world and was disputably the largest mosque in the world from 1673 to 1986, when the Faisal Mosque was constructed in the Islamabad. Although it was built late in the Mughal era, in the period of relative decline, its beauty
Elegance and scale epitomize Mughal culture achievement like no other monument in Lahore. Construction of the mosque began in 1671 under the direction of Muzaffar Hussain, Aurangzeb's brother-in-law and governor of Lahore. It was originally planned as a reliquary to safeguard a standard of the prophets here. Its grand scale is influenced by the Jama Mosque of Delhi, which had been built by Aurangzeb's father Shah Jahan. The plan of Badshahi Mosque is essentially a square mosque 170 meters on each side. Since the north end of the mosque was built along the edge of the Ravi River, it was not possible to install a north gate like the one used to Jame Mosque, and a south gate was also not constructed in order to maintain the overall symmetry. Within the courtyard, the prayer hall featured four minarets that echo in minarets of four minarets at each corner of the mosque perimeter. The mosque did not fare well during the rule of Ranjit Singh, Maharaja of Sikh Empire. When Ranjit Singh took control of Lahore in 1799, the mosque courtyard was used as a stable, and Hijaz around the perimeters were occupied by these soldiers. Ranjit Singh himself used the adjacent Hazuri Bagh as his official royal court. When William Moorcroft of England visited Lahore in 1820, he decorated that the mosque as being used as an exercise ground for the Sipahi infantry. 20 years later, a moderate earthquake struck Lahore and collapsed the delicate marble to rest at the top of each minaret. The open turrets were used as a gun emplacement as the year when Ranjit Singh's son Sher Singh occupied the mosque to Badshahi Mosque is essentially a square measuring 170 meters bombarded Lahore fort during the Sikh Civil War. After the British took control of Lahore in 1846, they continued to use Badshahi Mosque as a military garrison. It was not until 1852 that the British established the Badshahi Mosque Authority to oversee the restoration of the mosque so that it could be used in the Jame to return the Muslim as a place of worship. Although repairs were carried out, it was not until 1939 that extensive repair began under the oversight of architect Nawab Zain Jung Bahadur. His repairs continued until 1960 and were completed at a cost of 4.8 million rupees. थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो रोज की तरह फिर यही रिक्वेस्ट है, चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप तो मेरे अपने बच्चे, आप ये काम जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, अपना कीमती वक्त बचाएं और अपने वालिदैन का कीमती पैसा और इन ट्यूशन सेंटर से जान छुड़वाएं। घर पे रहें और आपको हर सब्जेक्ट के टोटल कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। घर पे रहें
और तैयारी करें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।